Good morning, student. Today we will start a new chapter, that is acid, base, and salt. And in this lecture, we will study about the topic indicator. This is generally used to find out which substance is acidic, which substance is basic, or which substance is neutral. So, a student, uh, at present now there are 115 elements are discovered, and these elements combine to form a compound, and according to their chemical properties, these all compounds are divided into three parts, that is acid, base, and salt. Acid, base, and salt are totally different from each other. So some terms, some indicators are used to detect which substance is acidic, which substance is basic, or which substance is neutral. So all substances are divided into acid, base, and salt. All compounds are divided in three categories: acid, base, and salt. And next topic is indicator. So indicators are generally dye which change color when it is put into acid or base. इंडिकेटर क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट कलर में चेंज हो जाता है व्हेन इट इज डिजॉल्व इन एसिड और बेस. So there are generally three types of indicators are used most commonly, and which are: first one is litmus, second is methyl orange, and third one is phenolphthalein. These three indicators are generally used to detect which substance is acidic, basic, or neutral, or salt. So ये तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम जनरली यूज करते हैं टू फाइंड आउट कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है. एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन दिस थ्री इंडिकेटर. सो फर्स्ट वन इज litmus. First one is litmus. This indicator is natural indicator having purple. Litmus are natural indicators, and it is also divided into two categories. One is red litmus and another is blue litmus, which gives different color in acid or base. So according to this, acids are those substances which turns blue litmus into red. Acids are those substances which convert blue litmus to red. एसिड क्या होता है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट करता है. उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक होगा. फॉर एग्जांपल, ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. सो ऑरेंज जूस कंटेन acid and it is acidic in nature. Also base are those substances which generally convert red litmus to blue. For example, caustic soda, NaOH. When solution of caustic soda put on a litmus paper, it change red litmus to blue. So caustic soda is basic in nature and orange juice are acidic in nature. So these are the tests to detect which substance is acid or base by litmus, and litmus is a natural indicator. Next is synthetic indicator. Synthetic
indicator. Synthetic indicator having two types. One is methyl orange and next one is phenolphthalein. These indicators are synthetic and methyl orange indicator having orange color. Having orange color, and when methyl orange indicator put into acidic, it turns into red. जो एसिड होता है, इफ एसिड में हम क्या डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज, क्या देगा वो, रेड कलर. एंड अगर बेसिक होगा, अगर उसमें हम क्या डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज, तो ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर. सो ये मिथाइल ऑरेंज है जो कि एसिड को किस में कलर में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में, और जो बेसिक होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, येलो कलर में. वैसे ही मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये कलरलेस होते हैं. ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. और जब एसिड, इसमें क्या डालते हैं, फेनोप्थिलीन, नो चेंज, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है. बट बेसिक में अगर हम क्या डालते हैं, फेनोप्थिलीन डालते हैं, तो वो किस में जाता है, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है. किस में आता है, पर्पल कलर में. तो ये सारे इंडिकेटर्स है, इसको हम किसके अंदर रखते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. और जो लिटमस था वो हमारा कौन सा इंडिकेटर था, नेचुरल इंडिकेटर्स. इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि यूज होता है. बंद कर दो. अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स आर, फर्स्ट वन इज टर्मेरिक, indicator. Turmeric indicator are yellow dye which turns red into basic medium. ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर्स होता है जो कि येलो इन कलर होते हैं और बेसिक मीडियम में रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं. अनदर इज रेड कैवेज एक्सट्रैक्ट. Red cabbage extract is also a natural indicators which is red in color and remains red in acidic medium but change into green when dissolved in basic medium. So these two are natural indicators. One is turmeric indicators which is yellow dye and turns red into basic medium. Another is red cabbage extract which is red in color and remains red in acidic medium but change into green when dissolved in basic medium. Another indicators is olfactory indicators. Olfactory indicators are those indicators whose smell change when dissolved in acid or base. For example, vanilla, onion, these are olfactory indicators. This smell change when it comes in contact with acid or base. So for today class it's enough. We'll meet in the next class with the next topic. So for today, thank you.